Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, here we are with another lecture. In this lecture, we are going to study about how to solve the system of linear equations, whether it be non-homogeneous system or the homogeneous system, by using the rank. In the previous lectures, we discussed about the Gauss elimination method, Cramer's rule, and matrix method. Find out the solution to these linear systems. And also, we studied about the basic points about the linear systems. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Now, if we are having the non-homogeneous system of linear equations, then how we will be finding out the solution to this by using the rank concept. So let us say we are having a system of linear equations which is non-homogeneous. से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे बाय फाइंडिंग आउट द मैट्रिसेस A, X and B. We will write whole of that system, that non-homogeneous system, into a matrix equation which will look like this: Ax is equal to B. तो जब भी हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय फाइंडिंग आउट दीज मैट्रिसेस Ax and B. नाउ आफ्टर दिस what we have to do is, सबसे पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन को बनाने के बाद we will form the augmented matrix. Augmented matrix is this matrix A colon B, and let me represent this augmented matrix by the matrix. तो हमारे पास यहाँ पर दो matrices हैं. If one is this coefficient matrix A and second is this augmented matrix C. तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले rank of A and rank of C find out करना है. Using any of the method, एक coefficient matrix को या augmented matrix को हम लोग क्या कर सकते हैं, normal form में, triangular form में, echelon forms में reduce करके या basic method से हमें A का rank and C का rank find out करना है. We have to find the rank of coefficient matrix and the augmented matrix. Now after this, analyzing these ranks, we will be finding out the solution. If rank of A and rank of C are equal, अगर coefficient matrix और augmented matrix दोनों का rank same आ जाता है, then we say that the system is consistent and only the system will be having some solution. But if rank of A is not equal to rank of C, that means कि augmented matrix and coefficient matrix का rank same नहीं है, then the solution of this system is not possible. It means the system is inconsistent. So these are the two parameters, rank of A and rank of C. Now if rank of A and rank of C are equal, then the system is consistent. When rank of A and rank of C are equal, then the system is consistent. But this system can be consistent either with a unique solution or infinitely many solutions. After we are getting that both the ranks are equal, we have another parameter which is n. N means the number of unknowns in the system of linear equations. जो भी हमें सिस्टम दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल टर्म्स हमें फाइंड आउट करने. If both of these ranks come out to be equal to number of variables, then we say that system is having a unique solution. But अगर rank of coefficient matrix or the augmented matrix it comes less than the number of variables used, then the system will be having infinitely many solutions. So this is the whole procedure. यहाँ पर यही चीज हमें ध्यान में रखनी है, and then we will be finding out the solution to this system, which is a non-homogeneous system. Let us move to some of the problems related to this to get some more clarity. So here we are having a system of linear equations. There are three linear equations in three variables. इसका हमें solution find out करना है, and we have to discuss its consistency, that whether the system is consistent or inconsistent. If it is consistent, then with how many solutions it is consistent, we have to check that. यहाँ पर there are three equations, three variables are there. Also, all the constant terms are zero. So all the constant terms are non-zero. So this means the system is a non-homogeneous system. तो जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ी उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं to find out the values of x, y and z. So this system is already in its standard form, and after that we will be writing this system into a matrix equation which will look like this: Ax is equal to B. Now the system can be equivalently written in this form: Ax is equal to B, this matrix equation, where the matrix A will be what? Matrix A को अगर हम लोग find out करें, so this will be the coefficient matrix 5, 3 and 7, 3, 26, 2 and then 7, 2, 10. This is the coefficient matrix. After this, what is the matrix X? Matrix X में variable terms आएंगी. This will be X, Y and Z.
and after this matrix B would be the constant matrix 4, 9 and 5. This whole of the system can be represented like this in the matrix form. हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? लेट मी नेम दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एस सी. दिस इज द मैट्रिक्स ए रेशो. फाइन, we have to construct this matrix. So matrix C, if we write here, matrix C will be the matrix A, which is this 5 3 7 3 26 2 and 7 2 10. यहाँ पर कॉलन लगा देंगे and here we are having the elements of matrix. So this is our augmented matrix. अब इस augmented matrix में इस matrix A को हम क्या करते हैं? अपर triangular form में reduce कर लेते हैं. So let us use the triangular form to find out the rank. Matrix A is this. इस matrix A को हम क्या करते हैं? Triangular form में, upper triangular form में reduce करेंगे to find out the rank of the matrix. And we will apply all these operations on this augmented matrix. यहाँ पर augmented matrix में ही हम लोग triangular form में reduce करेंगे matrix A को in this augmented matrix only. So we will be applying all the operations on this augmented matrix. The diagonal entries are these. This is the leading diagonal of matrix A. Matrix A का leading diagonal ये है. How to form this matrix into upper triangular form? Matrix A को upper triangular form में reduce करने के लिए हम क्या करेंगे? Diagonal, leading diagonal के नीचे जितने भी elements हैं, below this we are having 3 elements, 3, 7 and 2. इन तीनों elements को हमें zero करना है. We will be creating zeros at these 3 positions by using the row operations only. But row operations को apply करने से पहले हम क्या करते हैं? The first diagonal entry को हम सबसे पहले 1 बना देते हैं so that our calculations are easy. एक रो ऑपरेशन यूज करते हैं. R1 goes to 1 by 5 R1. अगर इस टाइप का एक रो ऑपरेशन मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C पर ऑपरेट करूं, then this matrix C would become what? Will be 1, 3 by 5, 7 by 5 and 4 by 5. Same operations will be operated on whole of this augmented matrix. And the other 2 rows will be as it is. This is the diagonal, leading diagonal here. Leading diagonal के below जितने भी elements हैं उन्हें 0 create करना है. So first of all we will be using this diagonal entry. First diagonal entry के नीचे जितने भी elements हैं सबसे पहले उन्हें 0 बनाएंगे. Then we will move towards the second diagonal entry. So by using this row 1, because this diagonal entry lies in row 1, तो row 1 का यूज करके मुझे 3 और 7 के प्लेस पर 0 फॉर्म करनी है. उसके लिए मैं रो ऑपरेशंस यूज करूंगी. R2 goes to R2 minus 3 R1 and R3 goes to R3 minus 7 R1. ये दोनों रो ऑपरेशंस अगर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर मैं ऑपरेट करती हूँ, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर इज रो 1 विल बी एज इट इज. उस पर कोई भी ऑपरेशन हमने ऑपरेट नहीं किया है. एंड देन सेकंड रो एंड थर्ड रो वुड चेंज. इट विल बिकम लाइक दिस. यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा. दिस विल बी 121 by 5 minus 11 by 5 and this would be 33 by 5. रो 3 would be changing. यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा. दिस विल बी minus 11 by 5, 1 by 5 and minus 3 by 5. So the augmented matrix is like this now. In this matrix again, what is the leading diagonal? This is the leading diagonal. अब यहाँ पर भी matrix A जो है that is not in its triangular form, upper triangular form, because यहाँ पर leading diagonal के below यहाँ पर एक element है minus 11 by 5 which we need to form 0 here. उसके लिए हम लोग फिर से एक रो ऑपरेशन का यूज करते हैं. रो ऑपरेशन would be R3 goes to R3 plus 1 by 11 R2. If we use this kind of operation, then the row 3 would be changing and यहाँ पर 0 create हो जाएगा. So what we will be getting here after applying this operation, the matrix C would now become 1, 3 by 5, 7 by 5 and this will be 4 by 5. Second row भी as it is रहेगी because we have not operated any operation on this. Third row would change. It will become like this 0 0 0 and this will again be 0. So the matrix A, if we see this matrix A, diagonal leading diagonal is this and leading diagonal के below जितने भी elements हैं उन सबको हमने 0 कर दिया. This matrix A is in upper triangular form.
Now we can easily find out the rank of A. This is the matrix A. These three columns constitute the matrix A and whole of this matrix is the augmented matrix. तो यहाँ पर rank of A क्या होगा? Rank of A would be the number of non-zero rows. यहाँ पर in this A we are having two non-zero rows. तो rank of A is 2. Again अगर मैं augmented matrix देखूँ तो मुझे B के elements भी count करने पड़ेंगे. So this will be 1 and 2. Two rows are there which are non-zero. Third row is 0 only. So rank of C will be 2. Rank of A and rank of C, augmented matrix and coefficient matrix, दोनों का rank same है. This means rank of A and rank of C are equal. This means कि the given system is consistent. Now whether it will be having a unique solution or infinitely many solution, it will be depending upon the rank. Rank can 2, but the number of variables here are n is equal to 3 here. Number of variables are 3. So number of unknowns की value 3 है. Rank of A and rank of C are less than 3. यानी कि rank of A and rank of C are less than the number of unknowns. This means कि the system is consistent but it is having infinitely many solutions. So the system is having infinitely many solutions जिन्हें हमें find out करना है. तो दो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सी जो है इट इज इन द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इफ यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के साथ वेरिएबल्स एसोसिएट कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ पी. तो दिस सी मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच लुक लाइक दिस: x plus 3/5y plus 7/5z is equal to 4/5. यहाँ पर सिंपली मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के साथ मैंने x, y एंड z वेरिएबल्स को एसोसिएट कर दिया एंड this whole of this expression will be equal to the element of p. Similarly सेकेंड रो से हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, this would be 121/5y minus 11/5z is equal to 33/5. So we are having here these two equations. इन दोनों equations का जो भी solution होगा that will be the solution to this given system. यहाँ पर because we are having two equations but three unknowns, so let us say this variable z is equal to some constant k. If we put this value in this equation number second, then we will be getting the value of y as 3/11 plus k/11. Simply z की value यहाँ पर put करेंगे, solve करेंगे, then the equation 2 will reduce to this kind of equation. x and y की value हमें k की terms में मिल गई. Now we will use both of these values in equation number 1 to find out the value of x. यहाँ पर first equation में y की value put करेंगे, this value, and z की value k put करेंगे, and after solving what we will be getting here is x की value हमें मिलेगी -16k/11 plus 7/11. So this is the solution to this given system. ये system जो है is consistent, वो हमने यहाँ से देख लिया कि rank of A and rank of C are equal and the rank is less than the number of unknowns. So this system is consistent with the help of infinitely many solutions. वो infinitely many solutions हम कैसे find out करेंगे, augmented matrix को फिर से system of linear equation में convert किया, वहाँ पर we were having two equations and three unknowns. तो यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को मैंने एक कांस्टेंट के इक्वल माना एंड k is any number here. k की different वैल्यूज के लिए हमारे पास different combinations of x, y and z आएंगे which will satisfy whole of the system, and then we are getting in this way the infinitely many solutions of the given system. So this was how by using the rank concept we can find out the solution to this system. Let us move towards another question. Again we are having a system of linear equations, three equations and three unknowns. यहाँ पर मुझे consistency discuss करनी है. We have to check whether the system is consistent or not. If it is consistent, we have to find the solution for this. तो उसके लिए सबसे पहले इस system of linear equations को एक matrix equation में convert कर दूंगी. The system of linear equation is just equivalent to a matrix equation AX is equal to B. Where matrix A, X and B we have to find out. Matrix A की बात करें, matrix A is the coefficient matrix. First column will be consisting of coefficients of X. So this will be 2, 1, 3. Second column में हम y के coefficients लिखेंगे 3, 5 and 11. Third column will consist of coefficients of z 4, 7 and 13. Matrix X क्या होगी, यहाँ पर जितने भी variables हैं उनको column wise लिखना है. This will be x, y and z. And matrix B is what? Matrix B जो है उसमें we are having all the constant terms 11, 15 and 25.
अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है, इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. दिस मीन्स सिस्टम इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, रैंक का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी की जरूरत पड़ेगी. So we will now form, after forming these matrices AX and B, we will now form the matrix C. This is the augmented matrix written like this. Matrix C क्या हो जाएगी, यहाँ पर A and B की values हम लोग put करेंगे. Then this augmented matrix will become 2, 3, 4, 5, 7, 3, 11, 13. And this would be 11, 15 and 25. This is the augmented matrix. Now हमें क्या करना है, this matrix is A. If we write this down, this is the matrix A. We know that these are the elements of matrix B. तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, and then we will be finding the rank of A and simultaneously the rank of augmented matrix C. Simplifying the calculation, let us use row operation, that is R1 goes to R2. R1 and R2 को interchange कर देते हैं. So what we will be getting here is augmented matrix will look like 1, 5, 7, 15, 2, 3, 4, 11. ये जो भी operations हम लोग operate कर रहे हैं augmented matrix पर कर रहे हैं. Now after this is the leading diagonal. इस leading diagonal के below में हमारे पास there are 3 elements जिन्हें हमें 0 बनाना है. तो first of all first leading entry का use करके हम लोग यहाँ पर zeros create करेंगे. Our first step will be to create the zeros at the positions 2 and 3. तो उसके लिए हम लोग रो ऑपरेशंस यूज करेंगे. We are using the row operations here. R2 goes to R2 minus 2 R1 and R3 goes to R3 minus 3 R1. तो जब भी हम एक पर्टिकुलर रो को यूज करके बाकी दोनों रोज में जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी रो हम लोग यूज कर रहे हैं, रो 1 हमने यूज किया, उसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसे कोशिश करते हैं कि 1 बना दें ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो सिंप्लीफाई हो सके. Now after using these row operations, we will get the matrix C as 1, 5, 7. First row would be as it is, पर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है. Row 2 and row 3 पर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, so both of these will change. But they will become 0, minus 7, minus 10. This will be minus 19. This will be 0, minus 4, minus 8. Now again there is a leading diagonal. augmented matrix या matrix A की बात करें तो यहाँ पर एक leading diagonal है, but we are having a non-zero element below this. इस element -4 को मुझे 0 create करना है, ठीक है. -4 को 0 में convert करने के लिए we will be using the row operations again. But before that let us simplify this matrix A. तो उसके लिए हम लोग दो operations use करते हैं. R2 goes to -1 by 7 R2 and R3 goes to -1 by 4 R3. इन दोनों ऑपरेशंस को अगर हम यूज करते हैं तो इन दोनों पोजीशंस पर -7 एंड -4 पर हम लोग 1 बना सकते हैं, जिससे हमारी फर्दर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी. तो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस द मैट्रिक्स C would become 1, 5, 7, 15 and this would be 0, 1, 10 by 7, 19 by 7, 0, 1, 2 and 5. तो मैट्रिक्स C इज बिकमिंग लाइक दिस. यहाँ पर फिर से एक डायगनल लीडिंग डायगनल है, उसके नीचे एक एलिमेंट है 1 जिसे हमें 0 क्रिएट करना है. यहाँ पर 0 बनाने के लिए we will be using a row operation here. R3 goes to R3 minus R2. तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई. कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होने के बाद इस टाइप का रो ऑपरेशन अगर हम लोग लगाते हैं, then what we will be getting here is the matrix C would look like here as 1, 5, 7, 15, 0, 1, 10 by 7, 19 by 7, and this would be 0, 0, 4 by 7 and 16 by 7. Now initially the augmented matrix was this. इसे हमने क्या किया, मैट्रिक्स A को हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में now we have converted this because this is the leading diagonal के नीचे जितने भी एलिमेंट थे उन सभी को हमने 0 बना दिया. So this means this matrix A has reduced to the upper triangular form. Now by using the rank concept, the matrix A has rank 3 and matrix C will be having the rank 3. क्यों? क्योंकि यहाँ पर matrix A is this. इस matrix A में the number of non-zero rows are 3. Rank of A is 3. Similarly, matrix C की बात करें तो यहाँ पर 3 rows हैं which are non-zero, hence the rank of C is 3. But here what are the unknowns?
In this case unknowns are 3. तो यहाँ पर क्या हुआ, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी आर इक्वल. तो दिस मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. नाउ इट इज हैविंग वेदर द यूनिक सॉल्यूशन और द इनफाइनाइटली मीनिंग सॉल्यूशंस. तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ अननोन्स कैलकुलेट किए. दीज आर 3. नंबर ऑफ अननोन्स आर 3. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, rank of A and rank of augmented matrix are equal and these are equal to the number of unknowns. So this means the system is having a unique solution. और वो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर दी, अब इसे फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे. हम क्या करेंगे, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड एसोसिएट कर देंगे एंड वी विल इक्वेट देम इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो वी विल बी गेटिंग अगेन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा, दैट विल बी x plus 5y plus 7z is equal to 15. Next is y plus 10 upon 7z is equal to 19 by 7 and third would be 4 by 7z is equal to 16 by 7. Now we are getting here three equations. थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, थर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली हमारे पास z की वैल्यू आ रही है 4. Now we will be using this value of z in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में z की इस वैल्यू को पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देन आई विल बी गेटिंग y as -3. y एंड z की वैल्यू हमारे पास आ गई बाय यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करती हूँ एंड सॉल्व करती हूँ, एंड सॉल्विंग इट वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड दिस विल कम आउट टू बी 2. तो यहाँ पर हमारे पास x is equal to 2, y is equal to -3 and z is equal to 4. This is the solution to the given system. तो यहाँ पर एक unique solution exist करता है which is given by these three values of. So this is how, by using the rank concept, by reducing the matrix A to its upper triangular form, we have solved the system of linear equations to find out the values of variables x. Now we are having another question which say एक system of linear equations given है, but यहाँ पर we are having an unknown here which is lambda and यहाँ पर solutions given है कि system के solutions हमें find out नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, there are two unknowns basically lambda and mu, उसकी values find out करनी है when the system is having a unique solutions, no solutions and infinitely many solutions. तो यहाँ पर we just need to have that condition. हमें condition पता होनी चाहिए कि ये system of linear equations जो है वो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस कब पोजेस करेंगे, एंड बाय यूजिंग दोस कंडीशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीस अननोन्स लैम्डा एंड म्यू. तो यहाँ पर दिस इज अ सिस्टम. इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेगा, इफ वी फाइंड आउट द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी. ठीक है, तो इफ दीज आर इक्वल and they are equal to the number of unknowns, then we are having the unique solutions. If these both rank are not equal, then we are having the no solution. And if both of them are equal but less than the number of unknowns, then we will be having infinitely many solutions for this system. तो यही same conditions हम लोग यहाँ पर use करेंगे, but for that we need to have the rank of A and rank of C. तो सबसे पहले ये जो system है, system को हम लोग एक matrix equation में convert करते हैं. This system, all of this system can be written in the form of matrix equation which is like this: ax is equal to b, and here the matrix A would be the coefficient matrix. इसे हम कैसे लिखेंगे, first column will consist of coefficients of x, will be 1 1 and 2. second column में y के coefficients आ जाएंगे. third column will consist of coefficients of z. this will be our coefficient matrix. what is the matrix x? जितने भी unknowns हैं x, y and z variable terms, उनसे बनेगी x matrix. and what is the matrix B here? matrix B is the matrix of constants 6, 10 and mu. Simply अगर हम यहाँ पर देखें, so this is a non-homogeneous system क्योंकि यहाँ पर there are two constant terms which are non-zero. non-homogeneous system के केस में मुझे rank find out करना है for augmented matrix and this coefficient matrix. coefficient matrix हमने find out कर ली. Now we have to find out the augmented matrix. what is the augmented matrix? it is A colon B. The augmented matrix is this C matrix given like this: A colon B. Now putting the values of A and B here, we will be getting the augmented matrix as. So now we are having this augmented matrix. अब हमें इस augmented matrix and coefficient matrix का rank find out करना है. So this is the diagonal, leading diagonal here. हम क्या करेंगे, simply matrix A
दिस इज द मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, दिस इज द मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, देन वी विल बी फाइंडिंग आउट द रैंक ऑफ ए। तो दिस इज द लीडिंग डायगोनल। अब इस लीडिंग डायगोनल में उसके नीचे देयर आर 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स जिन्हें हमें जीरो करना है। के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट एंट्री हियर। फर्स्ट डायगोनल एंट्री इज 1, तो सबसे पहले इस डायगोनल एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जीरो बनाएंगे। उसके बाद सेकंड डायगोनल एंट्री देखेंगे, सेकंड डायगोनल एंट्री के नीचे अगर नॉन जीरो एलिमेंट बच जाता है देन वी विल बी creating zero at that place. But first of all using the row operations, हम लोग फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे जो दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2 उनकी प्लेस पे जीरोस क्रिएट करेंगे। So using the row operations here, r2 goes to r2 minus r1 and r3 goes to r3 minus 2r1। तो ये दोनों रो ऑपरेशंस अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं then we will be getting zeros here and we have used row 1 to do this. So after applying these operations, the matrix C would become like this. First row जो है that will be as it is क्योंकि उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। Second row will be changing and this row would become 1 1 4 and 4. This will be 0, यहाँ पर 0 क्रिएट हो चुका है and this will be lambda minus 2 and mu minus 12. Now हमें देखना है क्या मैट्रिक्स A अपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हुई या फिर नहीं। This is the leading diagonal. Leading diagonal के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए they should be zero. There are 3 elements but one out of these 3 elements is non-zero. सबसे पहले हमें इसे जीरो करना पड़ेगा तभी मैट्रिक्स A would become upper triangular matrix. तो उसके लिए we will be using row operations. R3 goes to R3 minus R2. The matrix C would become after this operation 1 1 1 6. Second row जो है that will be as it is and the third row change हो जाएगी, this will be 0 0 lambda minus 6 and this term will also change, this will be mu minus 16. अब हम ये देखते हैं is this matrix in upper triangular form? This is the matrix A. matrix A में जो leading diagonal है this is this. leading diagonal के below जितने भी elements है there were 3 elements, all we have made 0. तो originally matrix A ये थी, leading diagonal के नीचे जितने भी elements थे वो नॉन जीरो थे, उन्हें हमने जीरो बना दिया। Now this matrix A is in its triangular form. अब इस ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स ए आ गई। नाउ व्हाट इज द रैंक हियर? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी मुझे फाइंड आउट करना है। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन है, इट इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इन सॉल्यूशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी पे जो भी कंडीशंस होंगी वो अप्लाई करने के बाद वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। So now first of all let us take the first case. First case में हमें ये given है कि this system of linear equation is having a unique solution. Now we are having the augmented matrix C and this is the matrix A. एक system of linear equation के पास unique solution तब exist करता है, the condition is if the coefficient matrix and the augmented matrix both are having the same rank and this is equal to the number of unknowns. ठीक है, इस टाइप की कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है देन ओनली दिस सिस्टम विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी 3, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 3 एंड बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स यहाँ पर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में रैंक विल बी इक्वल टू 3 व्हेन इट विल बी हैविंग 3 नॉन जीरो रोज। वन इज दिस रो, सेकेंड वन इज नॉन जीरो रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो यहाँ पर लैम्डा माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर लैम्डा माइनस 6 यहाँ पर 0 बन जाता है देन दिस विल बी अ 0 रो एंड उस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स वुड बी 2 क्योंकि हमें नहीं चाहिए। रैंक ऑफ ए को 2 होने के लिए इट शुड बी हैविंग 3 नॉन जीरो रोज हियर। नाउ इन दिस मैट्रिक्स ए देयर आर 2 रोज, 2 नॉन जीरो रोज, बट फॉर हैविंग द थर्ड नॉन जीरो रो लैम्डा माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा पर कंडीशन आ गई दैट लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 6 हियर। Now for the rank of C भी 3 होना चाहिए। So this is the first non-zero row, this is the second non-zero row and this is the third non-zero row. अब यहाँ पर अगर मैं C मैट्रिक्स की बात करूँ तो लैम्डा माइनस 6 अगर 0 हो भी जाता है तब भी this mu minus 16 should not be equal to 0। अगर लैम्डा माइनस 6 केस में 0 हो भी जाता है मैट्रिक्स C के केस में तो this row would become 0 0 0 and mu minus 16। तो यहाँ पर म्यू पर कंडीशन है कि म्यू माइनस 16 शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ से mu should not be equal to 16. So these are the two conditions on lambda and mu so that we can have a unique solution of this system. तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए 3 होना चाहिए, वहां से हमारे पास कंडीशन आई कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड रैंक ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 3, वहां से हमारे पास कंडीशन आई कि म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 16. सो दीज आर द वैल्यूज म्यू एंड लैम्डा, दे कैन टेक एनी वैल्यूज एक्सेप्ट दीज वैल्यूज 6 एंड 16. ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज आ गई इफ द सिस्टम इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड केस. सेकंड केस ये है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि द सिस्टम शुड नॉट पोजेस एनी सॉल्यूशन. तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल. मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स ए का रैंक इक्वल नहीं होना चाहिए. नाउ इन दिस केस इफ रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ सी इज 3 देन दीज आर नॉट इक्वल. अगर हम इस तरह से देखें तो मैक्सिमम रैंक जो सी का हो सकता है दैट कैन बी द रैंक सी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज, maximum number of non-zero rows here in this augmented matrix C can be 3. अगर rank of C 3 है तो rank of A जो है that should be less than the rank of C. तो उसके लिए if lambda minus 6 is equal to 0 and mu minus 16 is not equal to 0, तो उससे क्या होगा, अगर mu minus 16 non-zero हो जाता है and lambda minus 6 is 0, तो यहाँ से जो augmented matrix बनेगी this would be like this. इन दोनों कंडीशंस के बाद the augmented matrix would be this 0 0 lambda minus 6 and let us say A. This is A. A is not equal to 0. mu minus 16 को मैंने A लिख दिया. lambda minus 6 here is 0. तो lambda minus 6 को 0 कर देते हैं and mu minus 16 को नॉन 0 करें, then what we will be getting here is मैट्रिक्स A की बात करें तो मैट्रिक्स A का रैंक क्या होगा, this is rank 2. क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स A में number of non-zero rows are 2 here. थर्ड इज द जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हो गई, तो रैंक ऑफ ए हो गया 2. रैंक ऑफ सी की बात करें तो यहाँ पर देयर आर फर्स्ट सेकंड एंड 3 नॉन जीरो रोज आर देयर बिकॉज यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3. तो इस केस में क्या हुआ, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी आर नॉट इक्वल टू 0 एंड हेंस द सिस्टम विल बी पोजेसिंग नो सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तब फुलफिल हो पाएगी if lambda minus 6 is equal to 0 and mu minus 6 is not equal to 16. So from here, in the second case, we are getting that lambda is equal to 6 and mu is not equal to 16. So lambda की value 6 होनी चाहिए and mu should not be equal to 16. You can take any value except 16. So these are the two conditions on lambda and mu if the system is possessing no solutions. Now let us move towards the third case. In the third case, the system is having infinitely many solutions. सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट कर सकते हैं, इफ द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोथ आर सेम बट दे आर लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अननोन्स इज 3 हियर. तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी बोथ शुड बी इक्वल बट दे शुड बी लेस देन इक्वल, सॉरी दे शुड बी लेस देन 3. तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी की बात करें तो दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो, बट यहाँ पर ये थर्ड रो जो है, अगर थर्ड रो 0 बन जाती है, इफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम बिकम्स, इफ मैट्रिक्स सी बिकम्स लाइक दिस 0 1 4 एंड दिस इज कंप्लीटली अ 0 रो, इफ मैट्रिक्स सी बिकम्स लाइक दिस देन क्या होगा, रैंक ऑफ ए विल बी व्हाट, ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, rank of A will be 2. Rank of C will be what? First non-zero row, second non-zero row. So rank of C would be 2. And rank of A and rank of C दोनों equal हैं, but they are less than the number of unknowns. So यहाँ पर ये condition fulfill होती है. ये condition तभी fulfill होगी if the augmented matrix is looking like this. And augmented matrix इस तरह से कब दिखेगी, अगर हमारे पास this lambda minus 6 is equal to 0 and mu minus 16 is equal to 0. अगर लैम्डा माइनस 6 यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाती है, म्यू माइनस 16 भी 0 हो जाता है, then this condition will be fulfilled and then only the system will be possessing infinitely many solutions. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 and म्यू की वैल्यू आ गई 6. So by using these conditions for these different solutions, we are getting the values of lambda and mu like this in the different cases. Now let us move towards the homogeneous system of linear equations. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस वुड लुक लाइक दिस, ax is equal to b. इन जनरल
एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरह से लिखते हैं ax is equal to b. बट होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम में द मैट्रिक्स B is a null matrix. यहाँ पर जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं all are zero. तो होमोजीनियस सिस्टम जो भी होगा उसके लिए जो मैट्रिक्स इक्वेशन होगी that will be ax is equal to 0. And we know that homogeneous system is always consistent because it will always possess a trivial solution. Hence, it is always consistent. Now, it can be consistent with unique solution or infinitely many solutions. तो उसके लिए यहाँ पर conditions है, हमें क्या करना है, rank of matrix A find out करना है. So in this case, we need to find out the rank of matrix A, which is the coefficient matrix. अगर rank of coefficient matrix number of unknowns के equal आता है, then we will say that the system is having a unique solution, and that unique solution will be the trivial solution. Trivial solution means all unknowns are zero. All unknowns are zero is known as the trivial solution. तो trivial solution तभी exist करेगा if rank of the coefficient matrix is same as the number of unknowns in the system. If rank of A is less than n, the number of unknowns, then we will say that the system is having infinitely many solutions. And these infinitely many solutions are also known as non-trivial solution. Homogeneous system के केस में trivial solution का मतलब है कि unique solution exist करेगा, that will be all unknowns is equal to 0. And if homogeneous system possesses the non-trivial solution, this means it is having infinitely many solutions. And उसके लिए rank of A के ऊपर condition है, rank of A can be is equal to n or it can be less than the number of unknowns. So using these conditions, let us solve a problem on homogeneous system. Now we are having a system of linear equations here. यहाँ पर अगर हम देखें all the constant terms are zero. This means it is a homogeneous system. इस homogeneous system के केस में हमें solutions given है. Solutions का nature पता है हमें कि trivial solution है और non-trivial solutions है. उस केस में we are having a unknown here which is b. b एक number है जिसे हमें find out करना है, जिसकी value हमें find out करनी है. If the nature of solution we know. तो उसके लिए because it is a homogeneous system, तो homogeneous system के केस में सबसे पहले इस system को एक matrix equation में reduce करेंगे. So this homogeneous system can be written as a matrix equation AX is equal to 0. Where what is the matrix A? Matrix A is the coefficient matrix. The first column will be the coefficients of X 2, 1 and 4. Second column will consist of the coefficients of Y. Third column में this will be 2, 3 and B. This is the coefficient matrix A. उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स X होगी which is X, Y and Z, the matrix of unknowns. Now if this is having trivial solution and if this is having non-trivial solution, in both the cases we are having a condition on rank of a matrix and that matrix is the coefficient matrix. तो इस system के पास trivial solution तब exist करेगा if rank of A is same as the number of unknowns. In this case, what are the number of unknowns? These are 3. 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अननोन इज 3. तो यहाँ पर ये कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली. द सिस्टम इज हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3. अगर रैंक ऑफ ए लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स आ जाती हैं, इफ द रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, देन द सिस्टम विल पोजेस द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस को with the help of these conditions we will be finding out the value of b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का रैंक फाइंड आउट करते हैं. ए का रैंक फाइंड आउट करने के लिए वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स ए टू इट्स ट्रायंगुलर फॉर्म एंड ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. तो यहाँ पर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर देते हैं. R1 और R2 को इंटरचेंज कर दे देन मैट्रिक्स ए वुड बिकम व्हाट, इट विल बी 1 1 and 3 2 1 3 2 1 2 and this will be third row as it is. तो यहाँ पर हमारे पास लीडिंग डायगोनल क्या है, दिस इज द लीडिंग डायगोनल हियर. लीडिंग डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको जीरो करना है सो दैट ए कैन बी रिड्यूस टू इट्स ट्रायंगुलर फॉर्म. तो उसके लिए फर्स्ट डायगोनल एंट्री इज दिस. सबसे पहले इस डायगोनल एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जीरो करेंगे एंड फॉर दिस वी विल बी यूजिंग द रो ऑपरेशंस. द रो ऑपरेशंस विल बी R2 goes to R2 minus 2 R1 and R3 goes to R3 minus 4 R1. तो R2 पर ये ऑपरेशन लगाते हैं, R3 पर ये ऑपरेशन लगा देंगे. Then we will be getting the matrix A as first row would be as it is, second row would become 0 minus 1 minus 4 and this would be 0 minus 1 and B minus 12. Matrix A would become like this. यहाँ पर भी डायगोनल लीडिंग डायगोनल जो होगा
दिस इज द लीडिंग डायगोनल। यहाँ पर बिलो में 3 एलिमेंट्स थे, आउट ऑफ दीज 2 आर 0। अब थर्ड एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस रो 2। उसके लिए द रो ऑपरेशन वुड बी R3 goes to R3 minus टाइप का एक रो ऑपरेशन रो 3 पर लगा देते हैं। देन वी विल बी गेटिंग द मैट्रिक्स A as 1 1 3 0 minus 1 minus 4 and this will be 0 0 E minus 8. So now this matrix A has been reduced to the upper triangular form. अब हम इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमें कंडीशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट केस। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, then it is having the trivial solution. If the system is having the trivial solution, then rank of A should be equal to 3. ठीक है, then only it will have the trivial solution and rank of A 3 कब होगा? If it will be having 3 non-zero rows. This is the first non-zero row, this is the second non-zero row and row 3 जो है उसे non-zero row बनना पड़ेगा। उसके लिए this B minus 8 should not be equal to 0. अगर ये क्वांटिटी B minus 8 non-zero हुई तब हमारे पास रो 3 non-zero रो बनेगी एंड देन रैंक ऑफ A would be 3. तो यहाँ से B पर कंडीशन क्या आई? That B should not be equal to A. Now the second case is when the system possesses the non-trivial solution and this will be satisfied if rank of A is less than 3. अगर rank of A less than 3 होगा and rank of A is the number of non-zero rows in A. Number of non-zero rows in A, first non-zero row ये है, second non-zero row ये है, third is this row. R3 रो जो है it should be a zero row. अगर ये एक zero row बन जाती है then A would become like this 1 1 3 0 minus 1 minus 4 0 0 0. अगर row 3 zero row बन गई then A would become like this matrix and in that case number of non-zero row and hence the rank of A would be equal to 2 which is less than 3. तो यहाँ से row 3 जो है वो zero row बनी चाहिए and row 3 should be equal to zero row so that the rank of A is less than 3. तो उसके लिए B minus 8 should be equal to 0. अगर B minus 8 ये एलिमेंट 0 हो जाता है तो row 3 would be 0 and hence this condition will be satisfied and the system will be possessing non-trivial solution. तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ गई 8. So in both the cases we are getting the values of E by using these conditions on trivial and non-trivial solutions. So this was all about today's lecture. In this lecture we studied about the conditions on the non-homogeneous system and homogeneous system so that हम लोग उसके solutions find out कर पाएँ rank method का use करके। वो procedure हमने find out किया, वो conditions find out की, rank of the matrix, जो भी matrix थी coefficient matrix and augmented matrix दोनों पर क्या conditions होनी चाहिए so that a particular solution exists in case of non-homogeneous and homogeneous system. उनके बेस पे हमने questions किए। All about the matrix concept. यहाँ तक हमें matrix concept करना था। Now in the upcoming lectures we will be dealing up with eigenvalue problems. तो next lectures में हम लोग eigenvalue problem पे start करेंगे। Eigenvalues क्या होती हैं, eigenvectors क्या होते हैं, how do we find the eigenvalues and eigenvectors, and we will be moving towards the diagonalization process. We will be discussing some of the properties about the eigenvalues and eigenvectors. अब जो भी हम लोग study करेंगे वो सब हमारा आइगन वैल्यू से रिलेटेड होगा एंड जो भी अब तक हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है वो सब हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड टू डायगोनलाइज अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have studied till now about the matrices and the determinants, let me know in the comment section. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.